औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स ऑफ प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम। एवरी फ्राइडे को मेरा और आपका साथ रहता है रात 8 बजे से लेकर अराउंड 9 o'clock तक। और वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी पे आप ये प्रोग्राम देखते हैं लाइव, और हम लाइव हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे, सारे IP बॉक्सेस के ऊपर। हमारे स्टूडियोज़ की लाइन है 905-670-4114, 905-670-4114। आप हमें स्टूडियो में कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे @वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी, और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.votmedia.ca, जो कि आप हमारी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ मौजूद है। अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस की तफसील जो है वो बेहतर तरीके से सामीन तक और नाज़रीन तक पहुँचे, तो आप वॉइस ऑफ टोरंटो पे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। स्पेशल कस्टमाइज़ पैकेजेस हमने डिज़ाइन की हैं इस कोविड की वजह से हमारे बिज़नेसेस के लिए, जो कि हर्ट हो रहे हैं बिज़नेसेस में। तो ख़ास तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज जो है वो क्लियरली थ्रू आउट GTA और जहाँ जहाँ हमें देखा जाता है वहाँ तक पहुँचे, तो आप हमारी मार्केटिंग टीम को प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के ऊपर 905-670-4114 के ऊपर। नाज़रीन, आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं, और मेरी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। एक तो ख़ास तौर पे जो कोविड के हवाले से जो अपडेट्स हैं उस हवाले से भी बात करें हम, हॉस्पिटल्स की जो सिचुएशन है उसके हवाले से भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, और उसके साथ साथ जो अब ये जो रीओपनिंग की तरफ हम जा रहे हैं, जो फोर्ड गवर्नमेंट ने 3 डिफरेंट मैट्रिक्स दिए हैं इस वक्त 21 डेज़ अपार्ट, उस हवाले से उनका पर्सपेक्टिव तो हमने ले लिया था अपने पिछले प्रोग्राम में। लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि डॉक्टर साहब से, डॉक्टर नवीद मोहम्मद जो कि CEO हैं ऑस्लर मेडिकल हॉस्पिटल्स के, उनसे हम ये पूछें कि वो भी फोर्ड गवर्नमेंट के साथ जो हैं उनकी टीम का हिस्सा हैं, और गाय बगाए आप उनको देखते भी रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, तो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो उनसे ज़रूर हम लें, और उनसे हम ये पूछें कि ये जो 21 डेज़ अपार्ट जो कि फोर्ड गवर्नमेंट ने एक नया प्रोटोकॉल बनाया है, इसमें जिस तरह बिजनेस जो है वो खुलेंगे तो उसके बाद सिचुएशन कैसी रहेगी, और जो कोविड की जो इस वक्त सिचुएशन है करंटली हॉस्पिटल्स के अंदर वो कैसी है, हॉस्पिटलाइजेशंस कैसी हो रही हैं, वहाँ जो वेंटिलेटर की पोजीशंस हैं वो क्या हैं, आया कि आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उसके अंदर कोई ऐसी सर्टन और प्रोटोकॉल्स जो उन्होंने इन्फोर्स किए हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इस हवाले से उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। और उसके बाद प्रोग्राम में आगे चल के हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के रॉब ओलिफेंट होंगे हमारे साथ, और जो कि इस वक्त पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के। उनसे हम बात करेंगे डिटेल से पाकिस्तान और कनाडा के जो ट्रेड के ताल्लुकात हैं उसके हवाले से। जस्टिन ट्रूडो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं लिबरल गवर्नमेंट के, उनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं कोविड के अंदर, जो प्री पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक के बाद की जो सिचुएशन है वो क्या है, और ख़ास तौर पे इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लिबरल गवर्नमेंट करने जा रही है और कर रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, उस हवाले से भी उनसे हम बहुत सारी डिटेल से बात करेंगे। तो आप प्रोग्राम देखते रहिए, और अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं ड्यूरिंग हमारी लाइव ट्रांसमिशन में, तो आप हमें स्टूडियोज़ में कॉल कर सकते हैं 905-670-4114 हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हैं। इस पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आपका फीडबैक प्रोग्राम के हवाले से बहुत ज़रूरी रहता है, इसी तरह हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, और वो सी दैट्स ओनली इज़ अवेलेबल ओनली व्हेन यू कॉल अस एंड बी अ पार्ट ऑफ द शो एंड इंटरैक्ट विद अस लाइव। आपके साथ लाइव प्रोग्राम करने का मकसद भी ये होता है कि आपकी जो सिचुएशंस हैं उसको भी हम समझें, आपके कोई ऐसे मसाइल हैं जिन पे कि हम जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, उन तक जो रसाई है वो आप तक की जाए, और आपकी जो सवाल हैं वो उन तक पहुँचाए जाएँ, और कोशिश की जाए कि वो उन सवालों के जवाब जो हैं उनसे लिए भी जाएँ। तो इस हवाले से ये ज़रूरी रहता है कि आपका फ़ीडबैक जो है प्रोग्राम के हवाले से बहुत ज़रूरी है। आप ये प्रोग्राम देखते हैं और हमें सराहते हैं, आपके फेसबुक पे मैसेजेस भी आते हैं, ईमेल्स पे भी मैसेजेस आते हैं, वो बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम जब हम आपके साथ लाइव प्रोग्राम करते हैं एवरी फ्राइडे को रात 8 बजे, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बने और हमारे साथ आप इंटरैक्ट करें लाइव हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के ऊपर। अगर आपको मैसेज देना चाहते हैं,
कुछ आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये आपके लिए है। वॉइस ऑफ टोरंटो जो है दैट इज़ योर सिटी एंड योर वॉइस, ये हमारा स्लोगन है वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी का। ये आपका शहर है, आपकी आवाज़ है, हम आपके एक टीवी स्टेशन हैं, आपका प्लेटफॉर्म है, तो आप हमें कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। 9056704114 पे आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। हम बहुत सारे अपने नए प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। उनके टीज़र्स जो हैं, उनके प्रोमोज जो हैं वो आज हम लॉन्च कर रहे हैं, और हमारे कुछ मैसेजेस हैं जो कि मुस्लिम वेलफेयर कनाडा की तरफ से भी हैं, वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। तो हमारी कोशिश ये है कि आने वाले दिनों के अंदर आपके लिए बड़े एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स हमने तरतीब दिए हैं, जिसमें कि रियल स्टेट के शो हैं, इमिग्रेशन के हवाले से शोज़ हैं, सेलिब्रिटी का शो है, उसके साथ साथ मनी मैटर्स पे शो हैं, हेल्थ मैटर्स के ऊपर शोज़ हैं, कैनेडियन पॉलिटिक्स के ऊपर शोज़ हैं, पॉलिटिक न्यूज़ एंड व्यूज़ के ऊपर शोज़ हैं, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट जो हैं वो उसको होस्ट करें, ताकि बेहतर तरीके से जो उनका पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने भी लाया जाए और वो भी बेहतर तरीके से इसको प्रोग्राम को कर सकें। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम करने जा रहे हैं, और लेकिन सब कुछ बड़ा ज़रूरी ये है कि आप का फीडबैक जो है प्रोग्राम के हवाले से बहुत ज़रूरी है। आप हमें सारे IPTVs पे देख रहे हैं, फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप हमें नेट पे भी देख रहे हैं, और तो हम सारे चैनल्स पे अवेलेबल हैं अब। तो जहाँ जहाँ आप हमें देख रहे हैं, आप बल्कि अब हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम कौन सी जगह देख रहे हैं, TV पे देख रहे हैं या आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसी तरह हम अपने आप को गेज कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम्स को बेहतर कर सकते हैं। हम एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, और आपके लिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन आज हमने इकट्ठी की है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप उसको देखें। और कुछ हमने अपने नए प्रोमोज जो हैं वो हमने लॉन्च किए हैं आपकी तफरीह के लिए, और ये जो प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, आई एम श्योर यू विल बी एंजॉइंग इट इंशाल्लाह डाउन द लाइन व्हेन यू विल सी इट। लेकिन इसके साथ साथ आपका फीडबैक जो है वो ज़रूरी है कि आप किस तरह के प्रोग्राम देखना चाहते हैं। हम आगे चल के कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट के शोज़ भी लेके आ रहे हैं, जिसमें कि लाइव आर्टिस्ट यहाँ आके परफॉर्म करें हमारे साथ और आपकी तफरीह का बाइस बने। तो आप ये एक थोड़े से मैसेज देखिए, एंड आई कम बैक टू यू राइट आफ्टर दिस मैसेजेस। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक एवरी फ्राइडे नाइट एट 8 PM ओनली ऑन वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन। फ़लस्तीन का जो कॉज है, काफ़ी लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पूरी दुनिया के मुंह पर, ह्यूमन राइट्स वालों के मुंह पर। इंसानी जान की कीमत हर जगह पे सेम है। खुदा के लिए इंसान को इंसान समझे, बाकी मजहब तो आपका सारा कुछ अपनी जगह पे। It's always a very emotional. हम भी बैठ जमा कर रहे हैं फ़लस्तीन भाइयों के लिए। I think the long weekend will definitely still be in lockdown. हमारा जो बजट है वो पास हो गया है। क्या खास ऐसी प्रमोशन आप दे के जा रहे हैं? फर्स्ट 10 कस्टमर हमारे पास आएंगे। फर्स्ट 10 कस्टमर गोल्ड की जो नोट पिन है बिल्कुल फ्री देंगे। Please stay with us and you are watching Prime Time with Anjum Malik on Friday. रियल एस्टेट जरूरत भी इन्वेस्टमेंट भी। रियल एस्टेट खरीदते और बेचते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है? इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द सेलर्स एंड बायर्स। मैं असफर ताहिर आपके लिए ला रहा हूँ रियल्टर्स कैफे, जहाँ पर प्रोफेशनल रियल्टर्स एंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट आपके उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आप जानना चाहते हैं। रियल्टर्स कैफे ओनली ऑन वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी।
Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फ़ोन करें 1-866-754-3111। few days or so इंशाल्लाह, और आप इन प्रोग्राम्स को देखेंगे एंड यू विल रियली एंजॉय दिस शोज़। हमारे साथ डॉक्टर नवीद हैं, हु इज़ द CEO ऑफ ऑस्लर मेडिकल डॉक्टर साहब हॉस्पिटल्स एंड then the systems. Assalamu alaikum, Dr. Saab, a very good evening to you. Thank you for joining us on Prime Times. Assalamu alaikum, sir. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी ख़ास तौर पे ये जो फोर्ड गवर्नमेंट ने जो एक नया एक मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया है, रीओपनिंग मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं हम, उस हवाले से थोड़ा सा ज़रा हमारे व्यूअर्स को ज़रा गाइड कीजिएगा कि ये कैसे काम करेगा और इससे हॉस्पिटल्स कहीं ओवरवेल्म तो नहीं होंगे,
हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगी, केसेस जो हैं वो ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि अब तक जो अभी हमने देखा है, स्पेशली पिछले 2 हफ्तों में केसेस जो हैं आहिस्ता आहिस्ता रोज कम हो रहे हैं। ठीक है। स्पेशली हॉस्पिटल्स में जो है केस लोड कम हो रहा है। अगर मेरा जो विलियम ऑस्टर हेल्थ सिस्टम है उसका अगर आप मिसाल यूज कर लें तो एक वक्त था कि हमारे पास मोर देन 250 कोविड पेशेंट्स, फ्रेश कोविड पेशेंट्स थे जी। और अभी इस हफ्ते जो है आज हमारे पास 41 है, यानी कि 41 पेशेंट्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैक्सीनेशंस जो है इससे बहुत फर्क पड़ा है। और जो नया मैट्रिक्स है वो वैक्सीन और कितने लोग वैक्सीन लगा रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो उसका फर्स्ट ओपनिंग स्टेज होगा वो जब होगा कि 70% यानी कि 70% जो ऑन्टेरियंस हैं, एलिजिबल ऑन्टेरियंस, उनको वैक्सीन लग गई होए, और फिर नेक्स्ट वाला जो होगा वो 80% पे होगा और ऐसे ऐसे बढ़ेगा। जो तीसरा वाला होगा उसमें ये होगा कि कम से कम 25% ऑन्टेरियंस जो है उनको सेकंड डोसेस लग गया। तो मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि ये इसमें 2 रीजंस हैं। एक तो ये है कि इससे उन्होंने कोई डेट नहीं सेट की है, वो बस जितना वेट कर सकते हैं वो वेट करेंगे। और पहले तो ये था ना कि 1 महीना बंद किया और फिर खोल दिया, फिर केसेस बढ़ गए, फिर 1 महीना बंद किया फिर खोल दिया। ये जो नया सिस्टम है इसमें जो है बेस्ड ऑन % वैक्सीनेशन, और वो भी जो हॉस्पिटल की लोड्स हैं वो भी देखेंगे। और इससे दूसरी बात ये होगी कि लोगों को वैक्सीन लगाने की इंकरेजमेंट मिलेगी कि जो लोग ज्यादातर बोल रहे हैं कि भाई देखो सब कुछ बंद हुआ है, तो प्रोविंस बेसिकली ये बोल रहा है कि आप वैक्सीन लगाएं और जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएंगे उतनी जल्दी जो है सब कुछ खुलेगा। एक चीज जरूर मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है जिसको हम पहले बोलते थे इंडियन वेरिएंट, अच्छा, इसकी थोड़ी सी कंसर्न है क्योंकि बॉर्डर्स तो अभी बंद हैं और ये कनाडा में है, यानी कि फॉर एग्जांपल पील में मैंने कल नंबर्स चेक किए थे, पील में तकरीबन 94 केसेस थे ये इंडियन वेरिएंट के। अच्छा। और बस हमें एक डर है कि एक दफा अगर बॉर्डर्स खुल गए, स्पेशली जो इंडिया से फ्लाइट आने शुरू हो गई और बहुत से फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया में, इंडिया से या कनाडा, तो उससे थोड़ा सा स्पाइक ना हो जाए। मगर ये है कि जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं वो ये इंडियन वेरिएंट्स के ऊपर भी इफेक्टिव हैं। 100% इफेक्टिव नहीं है मगर 65-70% इफेक्टिव हैं। तो उससे ये है कि मेरी उम्मीद ये है कि चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो 21 डेज अपार्ट का जो एक थ्रेशोल्ड रखा है गवर्नमेंट ने, यू थिंक इट इज़ अ गुड, आई मीन अच्छा मैट्रिक्स है ये? इसी तरह 21 डेज के अपार्ट के बाद चीज़ों को खोलना चाहिए, या आप समझते हैं कि जितने अभी वैक्सीनेशंस हो चुके हैं, पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, यंगर लॉट्स आर गेटिंग वैक्सीनेटेड, इस 21 डेज की ज़रूरत नहीं थी हमें? नहीं, ये 21 डेज अपार्ट जो है ये सबसे बेस्ट चीज़ है। क्योंकि अगर आपको वैक्सीन भी लग गई है फिर भी प्रोविंस को वेट करना, यानी कि ओपनिंग करने में, इससे फायदा है। क्योंकि यही गलती पहले हुई थी कि जब हमने 26 दिसंबर को प्रोविंस ने लॉकडाउन किया था, इमरजेंसी ऑर्डर लाए थे, तो वो 26 जनवरी को खोल दिया और फिर फरवरी में फिर करना पड़ा, फिर मार्च में फिर करना पड़ा। तो आहिस्ता आहिस्ता बाय फेज 21 डेज अपार्ट, और ये खाली 21 डेज अपार्ट नहीं है, ये 21 डेज प्लस 70% वैक्सीनेशन या प्लस 80% वैक्सीनेशन। और जो इसका पहला स्टेप है 70% वैक्सीनेशन का, वो तो मेरा ख्याल है वो हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत से जो रीजन्स हैं प्रोविंस में वो दे आर क्लोज टू 70%। जो टोरंटो में ज्यादातर रीजन्स हैं दे आर ओवर 70% नाउ, और जो बाकी जो प्रोविंस में रीजन्स है वो 70% के अब क्लोज आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये फर्स्ट फेज तो इंशाल्लाह हम अकॉम्प्लिश कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ख़ास तौर पे कि अभी जो हॉस्पिटल्स की जनरल सिचुएशन जो है वो क्या है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है
जो कि ख़ास तौर पे मुझसे पूछा भी गया, आप जब पिछले प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे तो लोगों ने कुछ मैसेजेस किए कि कनाडा में जब ये मैन्युफैक्चरर्स हैं मॉडर्ना या मतलब ऑब्वियसली दे आर नॉट कैनेडियन मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स का जो एक जब उन्होंने अनाउंस किया था कि जब ये वैक्सीन आप लगाते हैं तो उसके अंदर जो सेकेंड डोज का पीरियड है वो 21 दिन से 28 दिन के दौरान है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बीच में लोगों को 4-4 महीने का टाइम मिल रहा है, कैन समवन स्टिल गेट अ कोविड विद वन शॉट ऑलरेडी टेकन एंड इज ही सेफ और ही इज स्टिल वल्नरेबल? नहीं, मैं आपको ये इसमें 2 पार्ट का आंसर दूंगा और ये बहुत जरूरी है हमारी ऑडियंस को ये समझना। पहले तो ये है कि आपको अगर एक टीका कोविड का लगा है तो उसके 2 हफ्ते बाद आपकी बॉडी में जो है इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन शुरू हो जाती है। अच्छा। और हमने ये देखा है कि जिन लोगों को टीका लग गया है अगर उनको फिर उन 2 हफ्तों के बाद कोविड हुआ है तो उनको ना अस्पताल जाना पड़ा है ना उनकी डेथ हुई है। ये जो वैक्सीन है इससे अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है 1 डोज लगा हुआ है या 2 डोज भी लगे हुए हैं तो आपको कोविड हो सकता है, मगर उसके असर बहुत कम होंगे, यानी कि जुकाम हो जाएगा, थोड़ा सा जिस्म में दर्द जाएगा, बुखार हो जाएगा, मगर ऐसा इम्कान नहीं आएगा कि आपको ऑक्सीजन पे जाना है या घर में वो मीटर लेके रखना है या अस्पताल में दाखिल होना है। तो जो वैक्सीन जो है ये कोविड प्रिवेंट नहीं करती है, ये हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ और सीवियर इलनेस प्रिवेंट करती है। दूसरी बात यह है कि जब शुरू में 21 डेज की इंटरवल थी, मेरा ख्याल है मॉडर्ना की और फाइजर की 28 डेज इंटरवल थी, उस वक्त हमारे पास इतनी ज्यादा वैक्सीन नहीं थी कनाडा में। तो इन्होंने फिर ये किया गवर्नमेंट ने कि उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया कि आप 4 महीने बाद लगाओगे, और उसका मकसद ये था कि ये चाहते थे कि जो कम से कम 1 डोज जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग जाए, क्योंकि अगर 28 दिन के बाद लोग वापस आ रहे हैं तो जिनको उसमें ये हो जाता कि कुछ लोगों को 2 डोज लगे हुए, कुछ लोगों को 1 लगा हुआ, बहुत से लोगों को 0 डोज लगे हुए थे। तो इन्होंने इसलिए टाइम बढ़ाया शुरू में, और उसमें इन्होंने थोड़ी रिस्क ली कि जितने ज्यादा लोगों को 1 डोज लग जाए। मगर फिर बाद में ये हुआ, हमें पता लगा कि अगर आप 28 दिन से ज्यादा वेट कर रहे हैं दूसरे शॉट के लिए तो आपको उससे ज्यादा भी प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि ये बहुत नई साइंस है। कोविड भी तकरीबन 1.5 साल पहले आया था, तो ये चीजें हम हर महीने नई नई चीजें सीख रहे हैं। दूसरा हमने फिर ये सीखा कि स्टडीज में देखा कि अगर आप 28 दिन से ज्यादा वेट कर रहे हैं, 3 महीने वेट कर रहे हैं, 4 महीने वेट कर रहे हैं, तो आपको दूसरे डोज से उससे ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है, इवन मोर देन 28 डेज। अब ये वक्त आ गया है कि इनफ लोगों को फर्स्ट डोज लग गया है। तो जो 80 साल के लोग थे जिनको शुरू में हमने लगाया था शॉट्स, उनको अब हम बल्कि जल्दी बुला रहे हैं, यानी कि पिछले 1 हफ्ते में मोस्ट 80 ईयर ओल्ड एंड ओवर को हमने सेकंड शॉट लगा दिया। अच्छा। मंडे से और कुछ जगहों से आज से जो है 70 ईयर ओल्ड को भी सेकंड शॉट शुरू हो गए हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है ये 80 पे गए थे, 1 हफ्ते बाद ये 70 पे आ गए हैं। मेरा ख्याल है ये नेक्स्ट स्टेप जो है 60 पे नहीं जाएंगे, मेरा ख्याल है ये नेक्स्ट स्टेप 60 से भी कम जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट स्टेप जो अनाउंसमेंट होगी अगले 8-10 दिन में, ये जरूर ये बोलेंगे कि आप 50 एंड ओवर भी आ जाएं, यानी कि 20 ईयर का पीरियड जो है एक साथ लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो है यानी कि 40-30 पे चले जाएंगे। ऑलरेडी हम 12 इयर्स एंड ओवर को इस वक्त शॉट्स लग रहे हैं। तो हमारी उम्मीद ये है कि सितंबर-अक्टूबर तक ऑन्टारियो में जिसने लगाना है टीका उनको 2 शॉट्स लग गए होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको जैसे कि मंथ ऑफ मई में अगर आपको शॉट लगा था तो चांसेस आर कि इफ यू आर 60 और 65 you could be called अगले 3-4 हफ्ते में आपको लग जाएगा। You could be called earlier than the dates that you've been given.
फॉर श्योर क्योंकि 80 साल वालों को हमने ऑलरेडी अर्लियर बढ़ा दिया। अब हम 70 ईयर ओल्ड वालों को 70 बिटवीन 70 80 को अर्लियर बढ़ा रहे हैं और फिर नेक्स्ट जो है 60s एंड 50s की बारी आ जाएगी। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा थोड़ा सा एक खौफ है जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका के इंजेक्शंस लगवाए हैं, वो ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन चलती हैं तो उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। उस हवाले से आपका क्या कहना है कि मतलब आपने वैसे इसका जिक्र किया था पिछले प्रोग्राम के अंदर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे साथ नए लोग जुड़ते हैं हर प्रोग्राम के अंदर, तो आपकी पास से ये बात सुने तो ज़्यादा बेहतर है कि उसमें कोई ऐसे डरने की चीज़ नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इवन दो कि there have been some incidences where people have lost lives, or they had blood clots, or they had some facial paralysis, those kind of things that has happened. वो facial paralysis की इतना डर नहीं था, मगर जो blood clots के इशू चल रहे थे तो वो जरूर एक कंसर्न थी कि अगर आपको एस्ट्राजेनेका का टीका लगा तो उस टीका लगने के बाद पहले 2 या 3 हफ्ते में, अगर आपके 2-3 हफ्ते गुजर गए तो देन यू आर फाइन। अच्छा, मगर पहले 2 और 3 हफ्ते में 0.01%, यानी कि 1% का भी 1%, 0.01% लोग जो हैं उन लोगों को 1 out of 100,000 को ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो, yes, we have the doctor with us right now, so if you could call our studio line, that will be greatly appreciated. I thought they were going to send me a link. Yes, we have already did, sir. I didn't get a link. Okay, we'll resend it again, sir. Thank you. Yes, जी sir. जी मेरी बारी। जी। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि अगर आपको एस्ट्राजेनेका का टीका लग गया है और उस 2-3 हफ्ते गुजर गए, देन यू आर इन द क्लियर। तो अब इस वक्त ये है कि आपके पास 2 चॉइस हैं। अगर आपने एस्ट्राजेनेका वापस लगाना है तो और आपके 28 डेज गुजर गए हैं तो आप कहीं कोई भी फार्मेसी में जाके एस्ट्राजेनेका इस वक्त लगा सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने एस्ट्राजेनेका नहीं लगाना है, आपने फाइजर या मॉडर्ना लगाना है, तो अब ये है कि एस्ट्राजेनेका के बाद आप फाइजर और मॉडर्ना लगा सकते हैं। स्पेशली फाइजर तो फॉर श्योर लगा सकते हैं, मॉडर्ना की अप्रूवल आ जाएगी अगले हफ्ते तक। तो ये है कि फिर आप अपनी एज ग्रुप का अनाउंसमेंट का वेट करें और आप अपना सेकेंड डोज फाइजर लगवा लें। ठीक है, क्योंकि अब जो है वैक्सीन हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये आपने अच्छी बात बताई कि मिक्स एंड मैच भी हो सकता है। जी। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो ब्लड क्लॉट डेवलप हो रहे हैं लोगों के अंदर जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से, ये इसकी रीज़न क्या है? आई नो कि आप एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हैं, आप डॉक्टर हैं, सो आई मीन इन दैट वे आई अंडरस्टैंड कि मे बी यू डोंट हैव द राइट आंसर टू इट, बट मैं सिर्फ चाह रहा था कि हमारे जो लोग हमें देखते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम उन तक पहुंचाते हैं, ताकि ये जो एक फियर फैक्टर है उसको हम मिनिमाइज करें। देखिए, जो वायरस है कोविड का, उसके ऊपर एक स्पाइक प्रोटीन है और वो जो स्पाइक प्रोटीन है उसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ओके। और जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो जो है वो स्पाइक प्रोटीन की तरह जो है एंटीबॉडीज आपके जिस्म में बनाती हैं। अच्छा। और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके प्लेटलेट्स वो होते हैं कि जो आपके ब्लड को या तो बहुत, यानी कि प्लेटलेट्स वो होते हैं कि अगर आपको जैसे आपका हाथ कट गया है या उंगली कट गई है तो वो प्लेटलेट्स जो है वो
वो स्कैब बनाते हैं, जो खून जम जाता है ना, वो प्लेटलेट्स की वजह से जमता है। करेक्ट। तो जो वैक्सीन है वो कभी कभी प्लेटलेट्स को अफेक्ट करती है। करेक्ट। और उससे दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो आपके प्लेटलेट्स बहुत थिक हो जाते हैं, यानी कि उससे ब्लड क्लॉट हो सकता है, या आपके प्लेटलेट्स बहुत थिन हो जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओके। राइट। और ये बहुत रेयर प्रॉब्लम है, मगर ये हो सकती है। जैसे अगर आप एस्पिरिन खाएं तो आपको एस्पिरिन से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। राइट। आप अगर वो क्या नेप्रोक्सेन या एंटी इंफ्लेमेटरी खाएं, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो दवाइयां हैं, इनमें यही है कि जो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका फेवरेबल रिएक्शन होता है, मगर कुछ लोगों में जो इनके साइड इफेक्ट हैं वो हो सकते हैं। करेक्ट। करेक्ट। डॉक्टर साहब, आपकी इनसाइट का हमेशा से वी आर वेरी थैंकफुल फॉर योर टाइम, और हमारे साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमारे साथ अपडेटेड हैं बात करने के लिए। मैं सिर्फ जाने से पहले आपसे ये एक और पूछना चाहता हूँ कि ये जो जैसे आपने भी जिक्र किया फियर फैक्टर के हवाले से और जो उसकी डिटेल आपने बताई, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन एक सिर्फ ये चीज़ बता दीजिए कि इस वक्त जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कैंसर पेशेंट्स हैं या कुछ सर्जरीज अवेटेड हैं, उसके अंदर कुछ बेहतरी आई है या वो अभी स्टैंड स्टिल हैं टिल फर्दर negotiations with the government and पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है एक मल्टी फेज प्लान अस्पताल्स को। अच्छा। कि आप अपनी सर्जरीज जो है वापस ओपन कर सकते हैं। ओके। ओके। और वो डिपेंड करता है अस्पताल के ऊपर, हर अस्पताल का कंडीशन डिफरेंट है। जैसे हमारा जो विलियम ऑजर हेल्थ सिस्टम है, हमारे पास सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट्स थे। और इस वक्त भी यानी कि वो पेशेंट्स इस वक्त कोविड पॉजिटिव नहीं है, मगर कुछ पेशेंट्स अभी भी हमारे अस्पताल में हैं। तो हम लोगों को पूरा 100% सर्जरीज में आने का प्री कोविड लेवल था, उसमें जरा सा टाइम लगेगा, मगर कुछ और अस्पताल हैं जो इतने इम्पैक्टेड नहीं थे, वो लोग जल्दी से जल्दी सर्जरी शुरू कर देंगे। मैं अपना एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि 15 जून से हम अपनी सर्जरीज बढ़ा देंगे। और फिर 30 जून को हम एक और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, और बाकी हॉस्पिटल्स भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी सर्जरीज ओपन कर रहे हैं स्टार्टिंग जून 15। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर, फिर आपसे आने वाले दिनों में बात करते हैं इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड इवनिंग सर। बाय बाय। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवीद महामिद, जो कि ऑस्लर मेडिकल हेल्थ सिस्टम के CEO हैं। इनके अंडर में 3 हॉस्पिटल्स हैं, ब्रैम्पटन सिविक और इटोबिको जर्नल, और प्लस जो पील मेमोरियल हॉस्पिटल्स हैं और ट्रिलियम हॉस्पिटल्स, उसको भी देखते हैं ये। और हमने चाहा कि थोड़ा सा अपडेट जो है वो आप तक पहुँचाया जाए एस्ट्राजेनेका के हवाले से, और दूसरी जो वैक्सीन है उसके हवाले से। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी द मिनिस्टर फॉरेन अफेयर रॉब ओलिवेंट होंगे। अभी हमारे साथ वो लाइन पे आए भी थे, बट वी वर जस्ट टॉकिंग टू आवर गेस्ट। सो आप गो फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक फॉर अबाउट 2 minutes. Please watch these messages and I'll come back to you right after that. Thank you very much. फ़लस्तीन का जो कॉज है, काफ़ी लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पूरी दुनिया के मुंह पर, ह्यूमन राइट्स वालों के मुंह पर। इंसानी जान की कीमत हर जगह पे सेम है। खुदा के लिए इंसान को इंसान समझे, बाकी मजहब तो आपका सारा कुछ अपनी जगह पे।
It's always a very emotional. हम भी पैसे जमा कर रहे हैं फलस्तीन भाइयों के लिए। I think the long weekend will definitely still be in lockdown. हमारा जो बजट था वो पास हो गया है। क्या खास ऐसी प्रमोशन आप दे के जा रहे हैं? फर्स्ट 10 कस्टमर हमारे पास आएंगे। फर्स्ट 10 कस्टमर्स गोल्ड की जो नोट थी ना बिल्कुल फ्री देंगे। Please stay with us and you are watching Prime Time with Anjum Malik on Friday. You are watching Prime Time with Anjum Malik, and I am very honored. Tonight I have the privilege of having the Member of Parliament Rob Oliphant, who is the Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs. He is with us tonight. A very good evening to you, sir. Excellent, very good. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Walaikum salam, sir. Thank you very much. Thank you. Can you hear me okay, sir? Everything is good? I can hear you. Can you hear me? Absolutely fine. Absolutely fine. Very good. And all I would say is that, I know I don't look as good as my pictures, but you look better than your pictures. Thank you very much. You're very lucky. Thank you very much, sir. I appreciate that. Thank you. Rob, I just want to ask you a couple of things. First of all, Prime Minister Justin Trudeau, when this pandemic started, he has been phenomenal with his policies, the way he have handled the pandemic all these times. I just thought that today is a good day that we can look back a bit because the numbers are getting much better. A lot of people have been inoculated now, and his policies actually have worked. I mean, he have helped people with the small businesses grants, with the SEBA loans, with the HASCAP loans. People have been getting served money at home. And I think we are blessed to be in a country like Canada. No other country I can think of that would offer those kind of economical benefits to their citizens as compared to Canada. Let's talk about that, a little bit about that. This pandemic, we've been in it now for about 15 months, is nothing like we've ever seen in our lives. Yeah. When I think about it, it's a little bit like my mom and dad talking about living through World War II from 1939 to 1945. Mm-hmm. There's that sense of we're at a war, we're in a war, and we actually had two wars. We had the war against the virus, so there's a health pandemic, but we also had a war about the economy. Because when you close down to fix the health situation, we had an economic war. And I think the Prime Minister decided very early we had to lead on both fronts. Yeah. And I know that on the health front, we're getting there. We finally, we reached number one in the G20 countries to get vaccinated. Let me tell you, everybody watching Voice of Toronto tonight, watching Primetime Live with Anjum Malik, get vaccinated if you're not vaccinated. Tell your friends to get vaccinated. We're right now at almost 60%, 59.8% as of today. That is correct. We've got to get over that hill. We've got to get to 60 to 70 to 80 to 90%, and then we'll lead the world. Because it's sort of like when you're on an airplane and they give you that that demonstration, and the pocket, the airflow drops from the ceiling, and they say if you're with a child, put yours on first, and then help the child beside you. Yeah. And that's what we're having to do in Canada. We've got to get well, then we've got to help the whole world. So the health thing is working. Vaccines are coming in. The provinces and territories are getting people vaccinated. It's all up to your viewers to make sure they get vaccinated now. But then on the economic front, we knew that it could be worse than the health front if we didn't act quickly. Businesses, people, moms and dads, kids, we needed to keep the economy going so that when this is over, we don't start from zero. And it's been rough. We made mistakes. We had to redo programs. We had to act quickly. And we fixed things as we went. Not perfect, but pretty darn good. Rob, I have a few questions for you, and this is not a scripted interview, as you know.
whatever comes in my mind to ask you, I'm going to go ask you. Absolutely. The first thing that people were scared about, that people were getting one shot and then now waiting for 3 to 4 months to get the second vaccination. So as a Canadian, the people, when they think about this, that the other countries were following the right procedures, that 21 days or 28 days that they're getting the second vaccinations. Because apparently what has happened, that a lot of people who have got one shot, they still have got COVID. Some people did lose their lives after that, not in Canada, abroad, when they were traveling. So it is some sort of people been on that kind of a boat where they are questioning the government, that did we lack in putting a plan together to get this manufactured in Canada properly when the pandemic started? Or we are in a place right now where the government is working with the manufacturers and bringing in abundance of that vaccine into Canadian arms? So we knew right away that we did not have in Canada companies that produced vaccines for this. The pharmaceutical companies left Canada. They made business decisions. So immediately, every time we saw a vaccine in development, we put in orders, hundreds of millions. We were very up front, getting ahead of the curve to make sure we got them. We recognized that we were in a different position. So we acted, and now it's proving to be actually quite good because we're number one in vaccination. However, what we learned in that process was that, and I'm not a physician, I want to give my hat off first to your physician who was just on. Yeah. That is great. The people on the front lines, the nurses, the doctors, the lab technicians, the people working, they're the heroes. Politicians, we're not the heroes. We're trying our best, but they're the heroes. What we realized was that in the world, all the capacity was already being used to make polio vaccines, tetanus vaccines, smallpox, yellow fever. It's a business. They're busy. Yeah. Suddenly the world has to come up with capacity for 12 billion vaccines. Yeah. And they have to even find the little bottles and the syringes. It's a massive, it's like a war. You've got to totally retool. Yeah. And it was bumpy at first. Yeah. But the other thing is, it was record speed to get a vaccine. Sometimes it takes 5 years, 10 years, 20 years to get a vaccine for a new disease. We got it in the world in less than a year because Canada and other countries invested money. Great. We invested money and they developed them. Universities, pharmaceutical companies, researchers worked. We got the vaccines. And they do the tests. And they do lab tests, and then they do tests on human, and they come up with a protocol. But then you get real world data. You get experience data. And so what we thought at first was the vaccines had to be done within 4 weeks. Then we realized it could be 4 months. And then we found out actually somewhere between 4 weeks and 4 months is a sweet spot. And we're still getting evidence all the time. What the government has said is we want to be evidence-driven, real-world data, change course as we go, make new recommendations. And I'm going to tell the listeners, mashallah, I got my second vaccine today. Oh, so that was today. I was at Rexall. I got my second, and I feel like I won the lottery. And it's just because I'm a little bit older than you are. So I got my first vaccine. And then now, about 11 weeks, 12 weeks later, I'm getting my second vaccine. What we found is the first vaccine is quite effective. And they made the decision to get more people with the first vaccine to save lives. Save lives. And that's what's up. So you look at the number of people who died in the second wave, very high. The number of people who died in the third wave, much lower, because the provinces, and I don't always give a lot of credit to Doug Ford, but and they haven't been perfect, but they got the vaccines out there and we're pushing them to get them out faster. I think we made decisions, and our death rate, 1/3 the number of people in Canada have died compared to the United States. We're about the same kind of culture, same kind of industrial level, and we've done pretty well. Not perfect,
Okay. But listen to your doctors, Yeah. listen to your pharmacists, and get vaccinated. Okay, that's perfect. On a different line, first of all, you have a portfolio of a parliamentary secretary to the Minister of Foreign Affairs. That's first of all, congratulations for that position, and it's a big portfolio. Tell our viewers, especially, when the borders will be open. Well, I don't have a crystal ball, and I'm not sure. What we made a decision to restrict border traffic and air traffic, and I know that's people from Pakistan and India have been very concerned about our slowing down the flights there to stop direct flights from those two countries. It's only as well as Caribbean. and it's only mangoes are flying into Canada on the PIA flights. Well, let's have a discussion now about mangoes, because the great debate in my riding in Thorncliffe Park is who's got the best cricket team and who's got the best mangoes. Correct. I hate to tell the Indians, but I vote for Pakistan for the mangoes especially. But that's my own little secret. Don't tell people. Those flights will start again when the evidence shows us that we're going to be okay. Right now, the variant D that's happening in India is very scary because it's very contagious and very deadly. It is. And so we are still being careful. Now, the American border, we want it to open. Don't get me wrong. We have $2 billion a day in trade that we do with the United States. People go back and forth. Goods go back and forth. We have companies in Canada that need to sell to the U.S. We need to buy from the U.S., but we're not quite there yet. But there is a task group, or several task groups that are meeting, and they include trade, they include health, they include global affairs, transportation, public safety. Everybody is there, and we're working with the Americans because we want it to be safe for both sides. Now, people are saying to me, well, when I've got 2 vaccines, can I travel? I hope so, but I don't know yet. We're moving carefully because the first goal is the health of Canadians. So then it's next. As far as the travel goes, as the government is in a plan to introduce a chip in the passport or like a vaccination card for people to travel, what people can foresee? We're working on that right now. Okay. We know, like when I travel to Africa quite regularly, I need to prove that I've had a yellow fever shot. Yeah. I can't get into certain countries unless I show them my vaccination card. Those That's yellow not cards. unusual. We want to be cautious on this. It's the kind of thing you have to work with other countries on. You can't just declare it by Canada. So we have to have an international kind of consensus about how we're going to do that. I got my little paper today to show that I had my second shot. Okay. I don't know whether that's going to be valid to anybody, but we're keenly aware that people want to travel. Right now, we're saying, please stay home. It's not a lockdown the way it was last week. We still need to keep people home. And you know something? This year, like last year, we're going to discover how beautiful Ontario is, how beautiful Canada is, and we're going to spend really good time with our friends and family. Inshallah, next year we'll be traveling more. It could happen earlier, but right now it's still limited. I got a lot of, just a few more questions to ask you. That's good. In Pakistan, and a lot of our viewership who are watching this television, they are from Pakistani community and some Indian community as well. So I'm going to focus on the Pakistan factor right now. What is the working arrangements right now in Pakistan with the Canadian embassies, working with the foreign affairs? Because, generally we've been told that if somebody need to approach the Canadian High Commission in Pakistan for any kind of a visa or for skill application or immigration applications, all these applications are being handled at a different abroad country. So how are those things getting mitigated right now with
Prime Minister Imran Khan there, and you working with our counterpart in Pakistan? Well, let me say, first of all, that we have a wonderful High Commissioner in Pakistan. We've actually added to the trade office to develop two-way trade, which is good for Canada, good for Pakistan, good for Pakistani business people who are in Canada trying to do more trade. So we have a new trade commissioner. We've had a couple of years now, but it's still developing. And I am going to tell you that I'm not happy with our visa situation in Pakistan. We have a great embassy staff, but the way that Immigration, Refugees, Citizenship Canada has organized, people have to go outside of Canada to get those visas. So I was the co-chair for a number of years of the Canada-Pakistan Parliamentary Friendship Group. I'm now vice chair. Salma Zahid is the chair, and she's a great MP from Scarborough Centre. And we just recently had a meeting with the Minister, Marco Mendicino, of Immigration, and we raised these issues. We're very pleased that we got the student stream opened up, but it's still too slow. We need more Pakistani students coming to Canada. We need more temporary resident visas. We need TRVs. We need visitor permits. We need more of them to come to Canada, and it should be faster and more transparent. We told them that. And we told them that people coming here to do business need to get an expedited way of getting to Canada because it's good for Canada, not just good for Pakistan, it's good for Canada. So we've raised these issues with Minister Mendicino. We're going to keep raising them. It's an issue in my office every day. I want to improve it. The visa rates are too slow. We don't have enough students, and it needs to be easier to come here for a friend's a funeral or a wedding, and all of those things. And we need the spousal sponsorship to be better understood and how spouses should be understood in Canada. So I am working on this. It is slow. Remember when Harper was the Prime Minister, it was horrible. We had almost a decade. Now we've fixed it a little bit. We have further to go. And you have my commitment. I work on this every day. The people in Thornton Park know that. I think the people in Mississauga and Brampton, Scarborough, Pickering, and Markham, and everywhere know that I am working on this issue. It's slow, and it's too slow, but we'll get there. Now, why do we think, in general, that when people apply for a visitor visa in Pakistan to come and visit Canada, to their loved ones or on trades or for a tourism, the visa issuance policy has always been very stringent as compared to the other countries. Why do you think, why is like that? The way they do that is on the experience as compared to India. Yeah, they have an experience of some people trying to overstay their visas. What I have said is take every case as it comes. Everyone should be, and it doesn't matter what country they're from, it should be based on that person, their travel record, their ability to pay for their trip, their ties to Pakistan if it's a temporary resident visa, their credentials if they're coming to Canada to permanently emigrate. It should be about their marks. If they're a student and the school they get into, it shouldn't be about the country they're coming from. That's been wrong. And I know that what's happened is because we've had some bad apples at certain times, that's affected other people. It should not. Every case, every person is unique, and they should be judged according to who they are, what their situation is, and how their travel will be important to them and to Canada. How do you foresee Prime Minister Justin Trudeau visiting Pakistan in the near future, or vice versa, Prime Minister Imran Khan visiting to Canada? Well, we haven't had Imran Khan, the Prime Minister, here. I met him when he was in Canada once, but he was then a cricket star and raising charitable funds for his cancer hospital. So that's when I met him. But I've not met him since he's been Prime Minister. What I hope is that when COVID is over, we can have more traffic between our countries at a highest level. That may be a minister first, maybe me,
I would love that. You may suggest that to your friends. The foreign minister. Rob should go to Islamabad. But then I've got to go to Karachi and Lahore because there's a great rivalry. I've got to be very careful. If I go to one city, I've got to go to all three. But our Prime Minister has had multiple conversations with the Prime Minister, with Prime Minister Khan, and that will continue. So the relationship is good between the two people, the two men. We've had good conversations at the ministerial level. I know when I worked with Minister Champagne, he had conversations with the Minister of Commerce and something. I think they have different names of their ministers there that we have here. Those doors are open, and I would love it if we were able to have a high-level visit. Rob, as you know that in Pakistan, they have an open sky policy. British Airways, Virgin Atlantic, a lot of other new carriers now are going to Pakistan in Islamabad, in Lahore, in Karachi. Why not Canada, Air Canada, should be going to Pakistan when PIA is coming to Canada 4 times a week? Well, those are business decisions. I don't know whether Air Canada has actually applied for landing rights to have those routes or not. I don't know that. I mean, I know that if you don't take PIA directly, you've got a long route to go. I know because I was planning a trip at one point and I had like 3 stops and it was quite difficult. Correct. But the pressure that you need to put on there is to Air Canada. Yeah. That's where you need to put the pressure on, so they'll apply to get landings in both places. But right now, we want PIA to do well, and I know that other people have used Qatar, they've used Emirates. There's other lines, or through Europe or through Doha, I believe. But I would like more direct routes, more ability to do it, and then my friends and my staff, like Mazhar Shafiq, who works on my team, wouldn't be so crabby when he came home. That would be very good. So, I keep saying we need direct flight. So we do. Everybody would look better and sound better when they get home. One more question that I thought I should ask you tonight, and I'll get you back again on one of the shows very soon. Prime Minister Justin Trudeau's policies in regards to the trade, especially across the border, number one. And secondly, all these economic stimulus packages that he has introduced when the pandemic started, do you have a plan to continue these economic stimulus packages further? Because I heard that the CEBA loans are expiring on June 30th. The HASCAP loans are expiring on June 30th. Do you have any info on that, Rob? Yes. So the budget that came out a few weeks ago has announced that many of the programs are being extended. Okay. Not all of them. It gets into great detail, and I can send your listeners more information if they want to contact my office. Right. We know you can't cut off cold turkey. You've got to help people do that. Like with the CERB, what we did was as the CERB got wound down, we enhanced employment insurance. Yeah. We've increased the Canada Child Benefit for families with children under 6. We've done that. We're looking at extensions to the business loans. We're trying to find ways to say and there are industries that are harder hit than other industries. So, we realize that the airline industry, tourism, travel, some of the personal care employees, they need more help. And so Chrystia Freeland, our tremendous Deputy Prime Minister and Minister of Finance, is managing this so that it is not a cliff, it's a slope. But what's happening, we found, is the economy is actually doing quite well. The economy, we've had growth in the economy because government programs have been there. Now, they can't last forever, and they shouldn't last forever because we believe in free enterprise. We believe in the entrepreneurial spirit. Correct. But we know that government's job is to step in and help when people need it. We're not afraid of that. The Conservatives, they keep
saying, we're too much in debt. Of course we're in debt, but we had to be. We absolutely had to be to save people's lives and their livelihoods. And so no apologies from me on that one, but they won't last forever. They're all going to wind down as the economy gets back in gear. But the main thing is to get people vaccinated. Yes. Get everybody vaccinated, get what they call herd immunity, and then we can get our kids back in school. We can get people, hospitals can kind of return to normal. Doctors and nurses can get a little bit of a breather and a break, and our economy will go again. That's our goal. Just a last question before I let you go tonight, and that is especially for the Liberal Party of Canada. How do you foresee in the coming elections, provincially and federally, are we connecting very well that we can see Prime Minister Justin Trudeau for the next 4 years in 2023? Well, I'll speak mostly about the federal because I know it the best. I think that there is a move in Ontario provincially that is good for the provincial Liberals. I'll let them speak themselves. Yep. The federal Liberals, I have absolutely no doubt that Canadians will return the favor. They are going to say, thank you. You've stood with us. You did make mistakes, but you corrected them. You kept the economy going. You got vaccines in here, and you kept we're also looking at the world. We need to help the world now. It can't just be about us. We have to help other countries, and Canadians are going to say, who can do that best? Justin Trudeau. I have no doubt whatsoever that Canadians will say, we need you. Not only will we support you, we need you. And Justin Trudeau is the person for the job. He's got the cabinet around him, and he's going to keep doing it. I am very thankful from the bottom of my heart for taking this time out tonight and talking to our viewers of Prime Time with Anjum Malik on Voice of Toronto Television. And please be sure that I'll get you back very soon, inshallah, next time. Well, you know they call me Rabbi. So you call me Rabbi, you're Anam G. I'll call you Anam G. Anjum G. Anjum G. Anjum G. Anjum G. I'm Rabbi, and I look forward to it again. My pleasure. Inshallah, we meet again. It has been a privilege. Thank you so much. A very good evening and very good night to you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रॉब ओलिफेंट जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर के साथ. हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और उसके बाद वापस आई विल कम बैक टू यू विद माय closing thoughts. Thank you very much. Please stay with us, and you are watching Prime Time with Anjum Malik on Voice of Toronto Television. Thank you. फ़लस्तीन का जो कॉज है, काफ़ी लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है. ये
एक बहुत बड़ा तमांचा है पूरी दुनिया के मुंह पर, ह्यूमन राइट्स वालों के मुंह पर। इंसानी जान की कीमत हर जगह पे सेम है। खुदा के लिए इंसान को इंसान समझे, बाकी मजहब तो आपका सारा कुछ अपनी जगह पे। It's always a very emotional. हम भी बैग जमा कर रहे हैं फिलिस्तीन भाइयों के लिए। I think the long weekend will definitely still be in lockdown. हमारा जो बजट है वो पास हो गया है। क्या खास ऐसी प्रमोशन आप दे के जा रहे हैं? फर्स्ट 10 कस्टमर हमारे पास आएंगे। फर्स्ट 10 कस्टमर गोल्ड की जो नोट है बिल्कुल फ्री देंगे। Please stay with us and you are watching Prime Time with Anjum Malik on Friday. रियल एस्टेट जरूरत भी, इन्वेस्टमेंट भी। रियल एस्टेट खरीदते और बेचते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है? इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द सेलर्स एंड बायर्स। मैं असफर ताहिर आपके लिए ला रहा हूँ रियल्टर्स कैफे, जहाँ पर प्रोफेशनल रियल्टर्स एंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट्स आपके उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आप जानना चाहते हैं। रियल्टर्स कैफे ओनली ऑन वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। जन्नते नूर में जुड़ती है जोड़ियां, अल्लाह ही बनाता है जन्नत में जोड़ियां। रिश्ता EVO.com नाम है अपना, बख्शिश है उसकी पर मिलाना काम है अपना। अल्लाह का करम, फरिश्तों की दुआएं, हम ऐसी जोड़ियां बनाएं। रिश्ता EVO.com, जहां प्रोफेशनल मैच मेकर्स बिना कोई वक्त जाया किए मिलाएं खूबसूरत जोड़ियां। रजिस्टर नाउ 9053700065। रो रो के कन्नी हथ लावेगी। तू आ जा मेरे कोल, हुण वक्त है तेरे कोल। किते देर न कर जावी, किते देर न कर जावी। ओ गल्ला ना रहिया, गल गल ते लड़दा है। मैं प्यार वखानिया, तू सिर ते चढ़दा है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक और आप ये प्रोग्राम देखते हैं एवरी फ्राइडे को रात 8:05 से लेके 9:15 बजे तक। और हम आपके साथ लाइव होते हैं सोशल मीडिया पे। हमारा सोशल मीडिया जो हैंडल है वो है @voiceoftoronto.tv, फेसबुक और यूट्यूब के लिए लाइव। और उसके साथ साथ आप हमें वॉच करते हैं सारे बॉक्सेस के ऊपर। हमारे स्टूडियोज़ की लाइन के नंबर है 9056704114। और अगर आप एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, आप बिज़नेस कम्युनिटी से हैं, तो कोविड में ख़ास तौर पे कस्टमाइज़ पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप हमारी मार्केटिंग टीम को कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद हमारे स्टूडियोज़ की जो लाइन है उसके ऊपर, एंड दे विल बी गेट इन टच विद यू इंशाल्लाह। और अगले वीक जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमने कोशिश की है कि जो लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा है, जिसको प्रोविंशियल असेंबली के जो हमारे दोज डेजिग्नेटेड जो कैंडिडेट्स हैं जो कि अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 1 साल के बाद, अगले साल इंशाल्लाह, उनके साथ हमारी एक बैठक होगी और उनके साथ हम आपकी तारुफ भी कराएंगे और आपकी बात भी कराएंगे। और उसके साथ हमारे साथ फोर्ड गवर्नमेंट के साथ जो उनके स्पोक्समैन है वो भी होंगे। और ख़ास तौर पे जो NDP की जो डिप्टी अपोजिशन लीडर है सारा सिंह, शी विल बी विद अस अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को हमारे साथ होंगी। सो इट्स ऑल इन ऑल इट्स गोना बी अ ग्रेट प्रोग्राम फॉर यू टू ऑल वॉच। आपका फीडबैक प्रोग्राम के हवाले से बहुत ज़रूरी रहता है। प्रोग्राम के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर रहते हैं। आप हमें लिख सकते हैं voiceoftoronto.tv@gmail.com, हमारा ईमेल एड्रेस है voiceoftoronto.tv@gmail.com।
और बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो सारे हमारे स्क्रीन पे हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पे हैं। तो आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और इंशाल्लाह I'll come back to you next week again on Friday. Till then, a very good evening, a very good night, and thank you for watching Prime Time with me, Anjum Malik, on Voice of Toronto TV. Have a good night. Bye-bye.